पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स को लगता है आइडेंटिटी कैसे कंटिन्यूस नहीं हो सकती। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर आइडेंटिटी कंटिन्यूस है तो मतलब टोपोलॉजी में कंटेनमेंट होना चाहिए। तुम्हें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, यानी तुमने पढ़ा है। मैंने कहा ना अभी, आइडेंटिटी अगर है फ्रॉम वन टोपोलॉजिकल स्पेस, आइडेंटिटी तो सेट तो सेम होना चाहिए तभी तो आइडेंटिटी होगी। तो ये वो टोपोलॉजी वन, मैंने कहा अगर ये कंटिन्यूस है तो it would be continuous, would imply I is continuous, would imply tau1 would be contained in tau1, tau2 would be contained in tau1. इसमें कोई शक है तुम्हें इस स्टेटमेंट में कि तुमने किया है? वेरी गुड, इसका मतलब तुमने किया है। मुझे कभी कभी नहीं है, हाँ सर नहीं किया है हम्म सर, क्योंकि लेकिन टाउ2 सर टाउ1 कंटेनेड होना चाहिए, टाउ2 में नहीं tau1 tau2 would be contained in tau. देखो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। सर ये 1-1 मैपिंग होगी, वो तो होगी ना, आइडेंटिटी मैप है, हाँ, बाइजेक्शन। ठीक। तो इस तरह से है ना, देखो आइडेंटिटी जरूरी नहीं है कंटिन्यूस। मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैं ले रहा हूँ ये लो x, यहाँ पर भी x है, लेकिन मैं और मैपिंग भी आइडेंटिटी है, यानी इट्स गोज लाइक दिस। लेकिन मैं टोपोलॉजी यहाँ पे लेता हूँ x5, यहाँ पे लेता हूँ मैं a एंड ए बी, ये मेरे ओपन सेट्स हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ b और bc, है ना। जी सर। तो अब यहाँ bc ओपन है, सो इनवर्स इमेज ऑफ जो bc है इज इक्वल टू bc, क्योंकि आइडेंटिटी है। But BC यहाँ पे open set नहीं है. So inverse image of an open set is not open. Therefore, I is not continuous. Although it's identity. तो लेकिन अगर continuous तभी होगी, of course, then tau1, tau2 must be contained in tau. मतलब everything open under this thing should also be open under this topology. तो बस यही था। इसके बाद हमें करना है closed graph theorem, which is equivalent to open mapping theorem, but we are not going to show that. We would show that closed graph theorem comes from open mapping theorem. Converse दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखा भी सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लंबा चौड़ा है, वो फंक्शनल एनालिसिस 2 के लिए होगा। सो क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम, अगेन इसकी जो स्टेटमेंट है, if x and y अगेन होने चाहिए कंप्लीट, यानी Banach स्पेसेस, and t is a linear transformation, not continuous. मैं खाली कह रहा हूँ linear transformation of x into y. Then t is continuous if and only if t has a closed graph. अब पहले ये पता होना चाहिए what do I mean by closed graph. Okay. So okay. So t is continuous if and only, मतलब closed graph का मतलब क्या है? मैं कहता हूँ देखो ऐसे है, I can think of graph of x. यानी suppose t जो है, t can be thought of as ordered pairs. यानी you can take x and t of x, right? Where x belongs to x. Now this would be always contained in x cross y, because x belongs to x and t of x belongs to y, right? तो इसको हम कहेंगे graph of t, ये set. Now x and y जो है, they are normed linear spaces, so which implies that they are topological spaces, and hence x cross y is a topological space under product topology.
It is a topological space. तो अगर now GT is a subset of X cross Y, अगर ये closed subset है, if GT is closed in X cross Y, the Cartesian product, then we say T has a closed graph. Okay. पहली बात तो ये है कि अगर टी कंटिन्यूअस है तो उसका ग्राफ हमेशा क्लोज्ड होगा. वो वन वे तो बहुत ही इजी है कि अगर कंटिन्यूअस है तो क्लोज ग्राफ है. द क्वेश्चन इज क्लोज ग्राफ शुड इंप्लाई कंटिन्यूअस. Now you can have a function that has a closed graph but is not continuous. So we'll do that also. Now suppose, now let t be continuous. So we show that let g be equal to graph of t. तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, x t of x ordered pairs, x belongs to x, force which is contained in x cross y. We show that G is closed. That is, we show that G closure is equal to G. तो हम दिखाएंगे, मतलब उसके लिए ये काफी है. देखो G is always contained in G closure. तो बेसिकली मुझे दिखाना ये तो हमेशा होता है G closure is contained in G. अगर मैंने ये दिखा दिया तो we are done. So let x y belong to G closure, right? Then of course there exist sequences. Closure में है और ये metric space है. Then there exist sequences. Let me call them xn. There exists, चलो मैं sequence लिखता हूँ, x t of xn. Sequences के बजाय sequence लेता हूँ. ये sequence which is contained inside G, क्योंकि G के elements इस type के होते हैं, such that xn t of xn converges to xy, which implies that xn converges to x and it's equivalent to that actually. yn converges to y, sorry. Oh, मैं लिखना था यहाँ पे, not yn तो है नहीं. It means that t of xn converges to y. So which implies that y is equal to limit n approaches infinity t of xn and x is equal to limit n approaches infinity xn. But t is continuous, I can take the limit inside. So this is equal to t of limit n approaches infinity xn, which is equal to t of x. Why? Because I am assuming that t is continuous. And y must be equal to tx, which implies that xy is equal to x tx, which belongs to G. And hence G closure is contained in G, which implies that G is equal to G closure, which implies that G is closed. यानी अगर कंटिन्यूअस है तो क्लोज ग्राफ तो है ही, लेकिन क्लोज ग्राफ होना कंटिन्यूअस होने का मतलब जरूरी नहीं है. जैसे अगर मैं लूं एक सिंपल सा मैप T from the set of real numbers to the set of real numbers, T of x अगर मैं लूं 1 by x in case x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0. Now then T has closed graph but it is not continuous. क्लोज ग्राफ आराम से देख सकते हैं. कैसे? फिर से वही, इसका जो ग्राफ होगा, सपोज तुम लोगे व्हाट, इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ ऑफ t would be x t x again as it is such that x belongs to R. So if we have to show that, है ना,
ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो ऐसे ही इससे हम हट जाएंगे, वरना तो यानी क्लोज ग्राफ का मतलब कंटिन्यूटी नहीं है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्लोज ग्राफ need not imply continuous. Continuous always implies closed graph, जो हमने अभी किया। तो हमें एक्चुअली इसका कन्वर्स प्रूव करना है, दैट इन दिस केस इफ x and y are Banach spaces and t is linear, तो यहाँ पे t of course linear नहीं है, तो हमारा इस पे अप्लाई नहीं होगा। नाउ कन्वर्सली, लेकिन हमारे केस में होगा, चूंकि हम जो assumption ले रहे हैं, हम ले रहे हैं t is linear. Conversely, suppose that of course ये function continuous नहीं है, as you can see, है ना, it's not continuous at 0. Conversely, suppose that t has a closed graph. We show that t is continuous. T is continuous. So let x1 be the linear space x, renormed, अब हमने वही ट्रिक की जो हमने इससे पहले की, renormed by norm of x1 is equal to norm of x plus norm of dx. अब ये जो है, ये तुम्हें सोचना है, इट इज जो x पे ओरिजिनल नॉर्म है, और ये जो है ये y पे ओरिजिनल नॉर्म है, क्योंकि dx बिलोंग्स टू y। हमने इन दोनों की मदद से एक और नॉर्म डिफाइन किया फॉर x1, राइट। सो ये है अपना नॉर्म, लेट मी कॉल दैट स्टार, देन स्टार indeed defines a norm. ये बहुत इजी है, you just have to use the properties of the norm and the fact that t is linear. अगर तुम वो करोगे, तुम देखोगे ये भी norm satisfy करता है सारी properties. And under this norm अगर मैं देखूं, norm of tx is less than equal to norm of x plus norm of tx. Why? Because मैंने कुछ non-negative चीज add की, but it is the same thing as norm x1. Therefore, t is continuous by this thing. Taken under which norm? As a mapping from this x1, जिस जहां मैंने नया norm दिया, to y. लेकिन मुझे दिखाना है t is a continuous map as a map from x to y. Okay. अब रास्ता क्या है? ये दिखाना कि ये टोपोलॉजी सेम है, ठीक है ना? So it therefore suffices to show that x1 and x have the same topology. तो उसके लिए वही आइडेंटिटी वाला चक्कर, क्लियरली आइडेंटिटी मैप अगर मैं देखूं, आइडेंटिटी ऑफ x is equal to norm of x, क्योंकि आइडेंटिटी ऑफ x तो x है, this is less than equal to norm of x plus, मैंने पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड की, which is equal to norm of x1. Therefore identity जो है, it is a map from x to, नहीं, not x1 to x is continuous. लेकिन मुझे चाहिए होम्योमॉर्फिज्म, है ना, कंटिन्यूअस है तो, लेकिन मुझे चाहिए जब भी होम्योमॉर्फिज्म होगा तभी ये टोपोलॉजी होगी, ठीक है ना। अब देखो x is already complete and of course अगर मैंने दिखाया x1 is also complete, अगर मैंने दिखाया x1 is also complete, जो कि अभी हमें नहीं पता, हमें पता x से कमिशन,
तो अगर मैंने दिखाया x1 is also complete यानी under this new norm जो हमें नई टोपोलॉजी मिली या जो नई मैट्रिक्स स्पेस बनी, that's also a complete metric space, then क्या होगा? तो then I would become a mapping, a bijection between two Banach spaces that is linear and continuous. Therefore, by open mapping theorem, it must be a homeomorphism because it must be an open map. तो इसका inverse भी continuous होना चाहिए. Bijection तो खैर identity होती है. So now, if we show that, if we can show that x1 is complete, open mapping theorem will guarantee यहीं पे हो ना open mapping theorem use will guarantee that I is a homeomorphism. Homeomorphism. And that will conclude the proof. Conclude the proof. Okay. So let, अब इसके लिए क्या करना है? Cauchy sequence लेनी है. X and B a Cauchy sequence in x1 and x under that norm. Now it follows that xn and t of xn are Cauchy sequences in x and y. You know why? Definition of this norm. तो मेरे कहने का मतलब है xn is a Cauchy sequence in x1. मेरे कहने का मतलब है कि norm of xn xm ये जो 1 वाला norm है, this goes to 0 as n m goes to infinity. But this by definition is norm of xn minus xm plus norm of t of xn minus t of xn. So अगर ये 0 बन जाता है तो this should also become 0 as nm approaches infinity. और चूंकि ये नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं तो इसका मतलब ये दोनों ही 0 हो जाएंगे as nm approaches infinity. Because इसका मतलब हुआ ये भी Cauchy sequence है, ये भी Cauchy sequence है within their respective norm. Okay, very straightforward from the definition of this new norm. Okay, now since both these spaces are complete, अब x भी complete है, y भी complete है, both these spaces are complete, implies that there exists x belonging to x and let me say y belongs to y such that xn converges to x and t of xn converges to y. Okay, which implies that norm of xn minus x converges to 0 and norm of t of xn minus y converges to 0 as n approaches infinity. Okay, अब तो कुछ करना ही नहीं है. Okay, लेकिन एक चीज हमें करनी है. Now since graph of t is closed, वो तो मेरी basic assumption है, in x cross y implies that xy lies on this graph क्योंकि ये लिमिट है सीक्वेंस का. मतलब x means where xn converges to x and t of xn converges to y lies on this graph. उसका मतलब ये है then y must be equal to t of x, तभी तो उस ग्राफ पे लाई करेगा. Now norm of xn minus x जो है वो बराबर होगा norm of xn minus x. ये वन नॉर्म है तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से दिस शुड बी t of xn minus x of course.
which is the same thing as norm of xn minus x plus norm of t of xn minus t of x. लेकिन t of x तो y है, so which means that norm of xn minus x plus norm of t of xn minus y, which goes to 0 as n approaches infinity, which implies that xn converges to x belonging to x1, which implies that x1 is complete, and hence the conclusion. Okay. हाँ, तो मैं फिर से, चलो मुझे लगता है, हाँ फिर आज के लिए इतना। हाँ, आज वही मैं कह रहा हूँ, इतना ही, लेकिन आई वांट टू रिमाइंड यू